पहला क्वेश्चन जब हम समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मुझे सुनने को मिला या फिर जिसने भी पूछा क्वेरी में कि समर कैंप इस्कॉन का है, इस्कॉन समर कैंप कैसे करेगा और क्या मोटिव है या क्या इस्कॉन का आइडिया है समर कैंप के, क्योंकि यूजुअली समर कैंप सोसाइटीज में है वो या तो स्कूल्स करते हैं या फिर जो डे केयर्स हैं वहां पर होता है. But how this idea of ISKCON conducting summer camps? I know I am connected with Evolve Pune. I know we are conducting from 2018 and maybe before then. But I want to understand what's the idea behind of conducting summer. शिला प्रभुपाद जी ने जब ISKCON की स्थापना करी, ISKCON की स्थापना करते समय शिला प्रभुपाद जी ने उसके 7 मिशन स्टेटमेंट्स और उसका सबसे पहला मिशन स्टेटमेंट है सिस्टमैटिक वैदिक एजुकेशन. वैदिक पद्धति विद्या के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है. One is called as para, second is called as apara. Apara is para. What is apara knowledge? Knowledge. Knowledge about math, the physics, chemistry, biology, all that, how to fiddle with the math. That is called as apara knowledge. But there is also another subject जहाँ पे या हमारे पहले ज्ञान है. 1957 from America got Nobel Prize. इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिली. They had found something called as antimatter. अगर आप में से कोई स्विट्जरलैंड गया है या साइंस रिलेटेड चीज जानता है, स्विट्जरलैंड में पिछले 15-20 साल से प्रयत्न चल रहा है इस एंटीमैटर को डेवलप करना. So all around Switzerland, they have they tried to produce 1 gram of that antimatter, $1 trillion. $1 trillion. So anyways, that's the subject matter, that's the detail about it. So para and apara. Para kya hai? That's about antimatter, which means spirituality. ये बात हमारा कल्चर था, सिखाया जाता था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण वह ज्ञान is missing entirely from today's education system. Just to make a point, भगवद गीता, आप इससे कितने लोग के पास भगवद गीता है? घर पे हाथ खड़ा करिए. I believe that all of you know Bhagavad Gita was spoken by Lord Shri Krishna and the student was Duryodhan, isn't it? Because Duryodhan was the most deserving student. Yes or no? Raise your hand. Duryodhan? No, really? Or maybe I'm wrong. Please, anyone want to correct me? Arjun. So, let me ask you, why not Duryodhan? Why not Duryodhan? Raise your hand. Now, if you see, Duryodhan also was a son of a king. Or let's say it was the same dynasty, Kuru Vamsha. It's a difference that he was, or let's say a cousin, uncle, whatever it is. But Yudhishthira Maharaja's brothers and your Duryodhan's brother, they were family. It's a relationship, direct blood relationship. Both went to same school, Dronacharya. Both had the same great grandfather, Bhishma Pitamaha. Both had the great advisor, Vidura. So why Krishna spoke to Arjuna? Because I believe Krishna spoke to Duryodhana. You are telling me Krishna spoke to Arjuna, so you have to answer that. And the reason why Duryodhana was not chosen by Krishna but Arjuna. Seeking. Arjuna seeking. Anything else? Arjuna was confused. Trust me, Duryodhana, nobody was ever confused as much as Duryodhana all across Mahabharata. He was the most confused character. We happen to read about Arjuna's confusion. Anything else? So in Bhagavad Gita itself, Krishna answers. And the discussion is about caliber versus character. Arjuna and Duryodhana both had. But who had a character? Now, Duryodhana tried to disrobe and insult his own bhabhi. Is that what I can call? Draupadi. और यहाँ पे अर्जुन इंद्र लोग जाते हैं और वहां पे उनसे एक अप्सरा मिलने के लिए आती है, कहती है, we'd like to spend some time together. उर्वशी. और जैसे ही उर्वशी को देखते हैं तो कहते हैं, हे माता, मुझे याद है कि कैसे मेरे पूर्वजों में आपका और पूर्व का संबंध रहा है. I see you as a mother. I cannot really enjoy with you. यहाँ पे अर्जुन है जिसके सामने विश्व की सबसे खूबसूरत स्त्री खड़ी है
और वहां पे दुर्योधन जो स्वयं अपनी भाभी का अपमान करता है. So what's the difference? Not of caliber but of character. So जो वैदिक एजुकेशन है, there's a huge difference. वैदिक एजुकेशन अगर देखा जाए, the greatest emphasis they give is on character building. इसका मतलब ये नहीं आपको स्किल नहीं सिखाई जाती. क्या हमारे पूर्वजों को पढ़ना लिखना नहीं आता था? So they were taught how to read. They were taught how to build upon their cognitive skills. They were taught how to ask a question and make an inquiry. अगर आप हमारी कोई भी ग्रंथ उठा के देखें, भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, anything, even if you read Mahabharata, you will see again and again there is an inquiry. And the inquiries encouraged. So many questions Arjuna have asked on the battlefield of Kurukshetra. Krishna कह सकते थे ना, सारे प्रश्न आज पूछिएगा, तब के देते. Why to ask all the questions in this class? We can have class tomorrow also. But the culture encouraged. Now, if you look at in the modern education system, modern education is centered around creating a product which is highly competitive. What you call as competitive word or something, like that, where individuals' capability is recognized, while those who fail to succeed according to the norms and the culture of today's education system, they are tagged as incapable or unqualified. That's how a division of the batches happen. Yes, I do acknowledge जो हमारा education system है आज का, that has produced great inventions, that has produced great discoveries, no doubt about it. काफी comfort की चीजें दी हैं. But please remember, if it has given us good things, it has also given us the knowledge that can destroy each one of us. Nuclear bomb was not given to us by any sage. It was a product of the scientists. COVID crisis is still debated. Who actually brought the COVID crisis and things like that. Yes, despite all this saying, no doubt the modern education, the science has brought about the culture of comfort and convenience and whatnot. But that does not mean our ancestors and elders were uneducated and were depressed or dissatisfied because they didn't have AC those days. क्योंकि उस समय सर्दी के मौसम में नहाने के लिए हीटर नहीं हुआ करता था, तो बहुत दुखी रहते थे. क्योंकि गर्मी के मौसम में एसी नहीं था, तो बहुत दुख हुआ करता था. और टीवी नहीं था जिसपे कभी सास भी कभी बहुत ही सीरियल नहीं आता था, तो माताएं बड़ी लोनलीनेस महसूस किया करती थी. Was it ever like that? Let me ask this question to you. So correct. The education has given us something, but don't have this idea that what we had was outdated, was of no use. Let me ask a simple question to all of you. How many of you would think, if you know of your elders and ancestors and the today's generation, how many of you agree, आज के ज़माने में we have far much more comfort and convenience? Please raise your hands. We have far much more means for entertainment. Yes or no? Please raise your hand higher, so I can see I'm audible to all of you. Now, how many of you would say all these things were missing in the previous generation, but people lived together and they were happy? Raise your hands. Please raise your hand, those who agree. And if you think no, that was not the case, you may raise your hand then. So, see, it's your own personal experience. So don't buy this idea that the modern education has brought about the advancement of civilization. That isn't the fact. Now let me just talk about why this modern education came into the picture. It's a subject matter I'm not going into some detail, but because the question was asked, why summer camp is organized, and I say it's a trailer. देखिए, modern education, the whole objective of this modern education is to create a product that can get employment in the industry. जितने लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे, national GDP will grow accordingly. No doubt about it. That happens. But please understand, अगर केवल हम अपरा मैटर का ही ज्ञान देते हैं और कैलिबर पे ही ध्यान देते हैं, कैरेक्टर बिल्डअप पे ध्यान नहीं देते हैं, उपनिषद में कहा गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूया इवाते तमो ये यायु विद्याम रतः. कहा गया है उपनिषद, ईशोपनिषद श्लोक है जहाँ कहा गया है, जो व्यक्ति अज्ञानता को पूछते हैं, their destination is darkness. और जो व्यक्ति ज्ञान को पूछते हैं, their destination is greater darkness. Now you might be confused. अरे ज्ञान को पूछने वाला will go to greater darkness. What does it mean? So see, for anything that we have, for everything we should have a test of it. You call it litmus test. So what is the test of education that we receive today, right? Then we can decide if it is really ज्ञान or not.
चाणक्य पंडित जी कहते हैं द टेस्ट ऑफ एजुकेशन इज मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्म सर्वेषु भूतेषु यह पंडित सर्वशः, समथिंग लाइक दैट इज द लास्ट लाइन। सो कहा गया है चाणक्य पंडित के द्वारा, पंडित कौन है? वह व्यक्ति है मात्रवत परदारेषु, परदारु मींस वाइफ। जो व्यक्ति दूसरी की पत्नी को देखता है तो प्रणाम करके बोलता है हे माते, which means there is a culture of respect. If you have got educated but you have not learned the basic sense of decency and culture, how to deal with each other, that's not the test of education. Matravat paradareshu paradravyeshu lostravat। paradravyeshu, dravyeshu का मतलब होता है possessions। जब आप दूसरे को बड़ी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं तो मन में द्वेष नहीं आना चाहिए, ये लगना चाहिए व्हाट्स अ बिग डील। तो चाणक्य पंडित कहते हैं पराद्रव्येषु लोस्त्रवत मींस टेस्ट ऑफ एजुकेशन इज जब आप दूसरे के पोजेशंस को देखते हैं तो मन में घृणा नहीं आती, यू सी दैट एज जस्ट मियर सैंड पार्टिकल्स। आत्म सर्वेषु भूतेषु, जैसे हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कैसे लोगों का मेरे प्रकार व्यवहार होना चाहिए, उसी प्रकार से व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि दूसरे के संग कैसा व्यवहार करना है। साइकोलॉजी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज attribution error. If in case anyone of you study psychology, what is attribution error? We all do it. Trust me, we all do it. It's called attribution error. What is that? For example, अगर यहाँ टेबल पे भी ग्लास रखा है पानी का और मुझसे ग्लास गिर जाता है तो मैं क्या कहूँगा? ओहो, गलती से गिर गया। परंतु अगर आप मुझसे मिलने के लिए स्टेज पर आते हैं और मिलते समय आपसे टक्कर लगे ग्लास गिर जाता है तो यू फूल, दिखाई नहीं देता क्या? That is called as attribution error, which means गलती मुझसे हुई है, ओहो हो, जानबूझ के नहीं, गलती से हो गई। पर जब सामने वाले से गलती हुई है, तू है ही मूर्ख। This is called as attribution error, which means आत्मवत, चाणक्य पंडित said, just like how you would like to be treated, learn the art of treating others. जैसे आप अपने आप को benefit of doubt देना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को भी benefit of doubt देना सीखना चाहिए। Like this, चाणक्य पंडित talks about what is the test of education. भगवद गीता में कहा गया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडितः समदर्शिनः। Interestingly, आजकल चर्चा चल रही है black versus white, men versus male versus female. There's a lot of debate about gender. Today, the science is discovering do we even have a gender or not. That kind of things are going on in the society. But what does this Bhagavad Gita talks about? Bhagavad Gita talks about a sense of comradeship, or you can say a universal viewpoint where we see beyond the body identification. Not only we don't see discrimination between the human species, but we see unity across species. विद्या विनय संपन्न, जिसके पास सही में ज्ञान होता है, नहीं तो वो मनुष्य चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंजेवाड़ी में काम करने वाला IT इंजीनियर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सड़क पे फिरने वाला कुत्ता हो या गधा हो, किसी के अंदर अंतर नहीं देखता है। Now this is because of para. This is because of spiritual knowledge. To conclude, what we are here to do, or what's our objective? हमने ज्ञान तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, but we have not understood what is the right conduct. हमने ज्ञान तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, but we have not understood how to respect others. हमने PhD डिग्री तो प्राप्त कर ली, but we don't know how to live in this world. हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, बड़े-बड़े पोजीशन मिल गई, बड़ी-बड़ी डिग्रीज मिल गई, but we don't know how to give the right to others to live. What is the point of our education? इसलिए समर कैंप ये एक ट्रेलर है, मूवी तो पूरी बाकी है, जैसे मदर विपाशा said. This was just to introduce the parents and the kids to the Vedic culture that we have. इसका मतलब नहीं है जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज में नहीं जाते। I'm myself graduate from American University. It's not that I didn't study, not that. अपरा ज्ञान की अपनी आवश्यकता है, पर वो परा ज्ञान के संग होना चाहिए। इसलिए अब according to new education policy, the government has made it compulsory that every student should be given a value education. जो कि कहीं ना कहीं तो आवश्यकता नजर आई होगी, वरना ऐसा क्यों एम्फोसिस किया जाता? That's what we are trying to do. थोड़ा लंबा आंसर हो गया। तो लेकिन जो आंसर में आपने 2-3 बार बोला, मैं वो समझना चाहता हूँ कि आपने कहा ये ट्रेलर है, मूवी बाकी है, तो मूवी क्या है, कौन सी मूवी है?
DDLJ है, कभी खुशी कभी गम है, क्या है? वेल आपको मूवी देखनी है तो जब आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे स्टॉल्स लगे होंगे. You'll get to know about the activities that we have for you here. Unfortunately, we cannot show something here because projectors are not like that. Okay, let's do one thing. How many of you have smartphone? That's a very silly question. Every one of you has smartphone. Why don't you take out your smartphone in your hand right now? Let's do an intentional distraction here. Take out your smartphone in your hands. Open a YouTube channel. All of you. Make it quick. Let's do counter. 3, 2, 1. How fast are you? Fastest finger first. So all of you got YouTube channel? Quick. 3, 2, 1. All right. Go on YouTube channel and type Evolve Pune. I repeat again, Evolve Pune. Just type it there. So how many of you have found the channel? Please raise your hands. Please raise your hand. How many of you are still looking for it? Okay. So if you go through the channel, you'll see every morning, almost every evening, हम लोग इस YouTube channel के माध्यम से भगवद गीता, रामायण, महाभारत, many other subject matter उसके ऊपर प्रतिदिन हमारे कोई न कोई कार्यक्रम रहते हैं. So what is up there? अगर आपको लगता है कि weekly हम लोग personal नहीं आ सकते हैं, so sit at the comfort of your drawing room, watch it on your television. And if you get a chance, you'll get to know about our website. We have launched a dedicated website. जिस website का नाम है evolvepune.com. उस पे जाकर आपको हमारे जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हमारी यात्रा, रिट्रीट्स, समर कैंप्स, भक्ति स्कूल, everything is provided. If you can come to the doorstep, please come there. If you cannot, stay at your place, watch it. There are podcasts. If you go on Apple Podcasts, type my name, you'll get sessions on Bhagavad Gita, etc. So everything is provided. It's only about you, how you use your finger and what buttons you press on your smartphone. Or completely different channels will open up. All right? Okay. ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा है लोगों ने, और स्पेशली जब मैं ऑफिस में जिसको पता चलता है कि जैसे हम मेंबर हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे भी कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि इतना सब करने की क्या जरूरत है. महीने में एक बार मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन कर लें और आ जाए तो क्या बुरा है. और वीकेंड पर तो वैसे भी बहुत काम होते हैं. मतलब वीकडे आदमी आईटी ऑफिस करे, वीकेंड में फिर वो टेंपल आ जाए तो कैसे काम होगा. तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो है ये वैदिक एजुकेशन ये इतना नेसेसरी है क्या, या आज के टाइम में ये सही में इतना रिलेवेंट है कि हमें अपना समय देना चाहिए. क्योंकि जिंदगी में वैसे भी आप सुनेंगे एक मुहावरा है कि मरने तक का समय नहीं है. See, I will leave this decision on to all of you to decide what is important and not important. But think about it. More and more old age homes are opening up. अगर आपने अपने बच्चों को सही ज्ञान नहीं दिया, so you know probably one of you gonna end up in an old age home. इतना ही नहीं, अगर आप IIT चेन्नई रिसेंटली की बात देखें, so IIT चेन्नई के अंदर इसी साल के अंदर there was a fourth society. Many of you might be engineers, many of you might be thinking your kids should become an engineer. We all have attempted to, get educated from IIT. हम सबको पता है कितना परिश्रम करना पड़ता है IIT में एडमिशन लेने के लिए. So many dreams parents have, and imagine the day the result come and your son have got qualified. How many of you will be excited, isn't it? It's a great honor and privilege that my son has got admission in IIT. And after getting an admission in IIT, somebody commits a suicide. There's something seriously wrong. I mean, you work so hard, your parents are happy with you, but still kids or the youth are committing suicide. So many criminal activities are happening. Criminal activities have not reduced, the crimes have not reduced. You all probably are reading the newspaper. There's almost every week shootout in American universities and colleges and schools. छोटे बच्चे हथियार उठाकर. So I would say there is something seriously wrong. और अगर हम देखिए जनरली क्या होता है ना, parents expect their kids to behave in a certain manner. I don't think so that anyone over here would expect or would ever hope कि मेरा बच्चा कोई गलत करे, कभी criminal activity में जुड़े, drugs, alcohol ऐसी चीजों में पड़े, या suicide जैसे evil thoughts भी हैं. But please understand, जिन बच्चों ने या जिन पेरेंट्स के बच्चों ने करा है, उन पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सोचा होगा. So we all wish good for our kids, but why society is going in this direction? So one reason, maybe I can just give you a little bit
about, this is again a psychological subject, there is a way of training. You might have seen being a parents, जहाँ बच्चों को कुछ सिखाना होता है, जैसे अगर बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता हल्ला मत करो, they scream at the child and tell the child keep quiet. And child is worrying, अबे चीख के बोलता है मेरे को, खुद चीख के बोलता है, मुझे बोलता है हल्ला मत करो. So there is a little missing gap in our understanding. How do we care for the child? I'll give you a very quick model. It's not the right time to educate you on that, but let me give you a little bit just of it if we can capture it. The model is called as MMOT. M stands for modeling. यद्यद् आचिति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकसत् अनुवर्तते. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मॉडलिंग मीन्स टू बिकम रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड. आप अपने बच्चों से जो व्यवहार चाहते हैं, see, I mean, I'm pretty sure all of you are educated, you know about a little bit of child psychology. The kids do not learn with what you speak. Kids learn what they see. Please, again, let's not get this point straight. आपके बोलने से नहीं सीखते, बच्चे आपको देखकर सीखते हैं. अगर आप दिन भर टीवी पे बैठे रहते हैं, बच्चों को बोलते हो टीवी मत देखो, आप कितना ही बोलते रहिए, it will not make a difference. Therefore, modeling. The change that you want to inculcate in your child, in your youth, in your spouse, in your family members, you have to show that change within you. That is called as modeling. Modeling के बाद आता है mentoring. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति मुक्ते भोजते चैव सद्विधि प्रतिलक्षणा. What is this mentoring? Mentoring means become a friend. How do you become a friend? You have to do 5 things called as cares. C for care, A for appreciate the child, R for respect, E for encourage, and cares, the last S stands for sacrifice. If you fail to do that, the child will not develop that love and affection. That is called as mentoring, being a friend to the child, and these 5 elements have to be part of that relationship. This is not only about the kids, dealing with the kids, dealing with the spouses also. Then when you've done modeling, mentoring, then comes organization. What is organization? Yukta ahara viharasya yukta cheshta sukkarmashu yukta sopna bodhasya yoga bhavati sadhakaha. Organization किस चीज का? You need to organize your own life. Your ahar, your vihar. Ahar means the eating habits, your recreation, that has to be regulated. Unless you are self-organized, you cannot instruct your child to become an organized. तो बहुत टाइम बर्बाद करता है, दिन भर मोबाइल पे बैठा रहता है, and the child is looking at you. आप भी तो फोन पे बात करती रहती है मम्मा. You may not be sitting and watching something on the social media, but he is observing at you. So if you want to be, parenting is actually the most difficult teacher job. Every parent is a teacher, and as a teacher we need to be role model. As a teacher we need to organize our life, and then the last thing comes teaching. When you have done modeling, when you have done mentoring, when you have done organization means create a conducive environment for the child to practice the culture that you want the child to inculcate. When you have done all this thing, now you can tell the child what to do. But we begin reverse. We tell the child first what to do. और कहते कहते हम भी थक जाते हैं, सुनता सुनता बच्चा भी थक जाता है, और फिर कहते हैं बच्चा सुनता ही नहीं हमारी. That's the reason. So I kind of lost the question. What is the question? Question was कि ये जो बच्चों का ये मतलब ये हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों में ये क्यों चाहिए शिक्षा, इसलिए हुआ है. Those also forgot the question. Well, that's a good sign. That means absorption. I can give a benefit of doubt to myself. I need this. Okay, anyway, so I don't know, I answered maybe something. Okay. What else? ठीक है, बच्चों को भी हमने समझ लिया. लेकिन आप मेरा बताइए, मतलब मैं तो अधेड़ हो गया अभी. I cannot disclose my age. So or I can. I'm not a woman, right? So I have crossed 35, right? So that means अगर मैं 70 years का spend लेता हूँ एक lifetime का, तो I cross half of my life.
तो अपना क्या अभी बच्चों का तो हो गया, वो तो MMOT से सीख जाएंगे, KS से सीख जाएंगे, बड़े क्या? While MMOT करते हुए आप पहले सीख रहे हो ना, आप बच्चों को सिर्फ MMOT मॉडल थोड़ा दे रहे हो, वो मॉडल आपको अपने जीवन में उतारना है. But I kind of get a glimpse of your question, what you're trying to raise. I don't know if you actually meant that. कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को सुधार दीजिए, आप हमारे बच्चों को ले लीजिए. मैं सुधरा हुआ हूं, कोई आवश्यकता नहीं है सुधार की. यहाँ पे दूसरा, जब आप ऐसी संस्कृति की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, ये सब तो माइथोलॉजी है. आप हमें आज की तारीख में, आज की आधुनिक दुनिया में भगवत गीता, महाभारत किसने सोचा था कभी हुआ है? Are you kind of indicating to that mindset, or you want me to speak of something else to indicate? I mean, भगवत गीता की बात तो बाद में करेंगे, बट बड़े कैसे सीख सकते हैं, मतलब बड़ों को सीखने के लिए क्या प्रयत्न कर रहा है, या फिर आपकी तरफ से क्या प्रयत्न हो रहे हैं? See, as I said, we are conducting all kinds of programs based on, just like we have started a series called as mind management. This is subject matter of human psychology, जिसका विस्तार से भगवत गीता में चर्चा किया गया है. How many of you here would agree, once in a while, or you have ever had an experience of sleepless night? आपका मन बहुत चिंतित है, रात को नींद नहीं है. कभी किसी का एक्सपीरियंस हुआ है? हाथ खड़ा करिए, प्लीज रेज योर हैंड. How many of you have had a little bit of anxiety attacks? In other words, you've got really nervous about things, or you not even feel like eating, sleeping, anything. How many of you have had that experience that you cannot really focus? You feel at times quite distracted. How many of you had that experience? So you're the right candidate for this mind management course. That's being conducted right now on Saturday evening. Like this, there are many programs, many initiatives, but I see there's a fundamental issue. लोगों को लगता है मेरे जीवन में मुझे करने के लिए बहुत कुछ है. I cannot take out time for self improvement. देखिए, ये जो योगा शास्त्र है, भगवद गीता जैसा जो शास्त्र है, is almost same as any science book. Any science teaches you theory, when you perform an experiment, you get the result. जब दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम बहुत तैयार होते हैं, बट योगा शास्त्र कहते हैं इस योगा की पद्धति के अनुसार एक्सपेरिमेंट आपको अपने ऊपर करना है. जब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट, जब अपने में बदलाव लाने की बात आती है, तब हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं. How many of you agree? We find it difficult to do that. And it's not only at the psychological level, even the psychophysical level. How many of you have made a commitment that I will go for jogging, I will do yoga, but we fail to commit to it? How many have done that? Even for physical well-being, we struggle. It's a mindset we have got it. We know that yoga, jogging, maybe some kind of healthy exercise is important, but we fail to do it. अगर हम व्यक्ति शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहा, मन तो उसको दिखता भी नहीं है, मन का ध्यान कैसे रखेगा? So for such things, I often make a statement. आप देखिए, there is a connection between body and mind. How many of you have that experience? If it is 3 o'clock in the morning, you have a flight to catch, and you are used to not waking up before 8 o'clock. It's very difficult now. तो रात को सोने से पहले आप एक संकल्प लेकर सोचते हो, कुछ भी हो जाए 1 बजे उठूंगा. Agreed? But because you have decided, your body cooperates. How many have that experience? This is a classical issue. It's actually a problem coined by a French scientist by the name of Isaac. This is called as body-mind relationship. आप मन में क्या सोचते हैं उसके अनुसार आपका शरीर काम करता है, और शरीर किस प्रकार से काम करता है उस प्रकार से आपके मन पे प्रभाव पड़ता है. Let me give you an example. Imagine if you have not taken a rest. कई बार ऐसा हो जाता है कॉलेज लाइफ में या प्रोजेक्ट डेडलाइन जब होती हैं, हो सकता है 1 या 2 दिन आपको सोने को ना मिला हो. अगर आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, how many of you agree your mind becomes very agitated and short tempered? Raise your hand. जब आपके बॉडी पे तनाव पड़ा, शरीर पर, जब आपकी बॉडी पे तनाव पड़ा तो आपके मन पर भी तनाव पड़ा, और जब आपके मन ने संकल्प करा तो आपके शरीर में भी योगदान दिया. I'm just giving a little clue about it. There is a lot to explore into this. As a human being, please understand there's a huge difference between a human being and the animal species. Animals act according to impetus. उनकी जैसी इच्छा हुई वो करते हैं. मनुष्य, as a human being, we have the control. We have the choice to take control of our life. We can decide to be like Arjuna. We can decide to be like Duryodhana. That is each of our choice. I would just make a humble request.
please make an attempt, come for one of the programs, see if it adds value to your life. जैसे आप सभी ने कहा कि आपके बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, nothing to shy about it, that I need to add some values in my life. It's not a big deal. It's about self-improvement. जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, isn't it? So there's a lot of improvement we have to do it. Thank you, Prabhuji. Your answer reminds me my gym subscription, yearly gym subscription that I have taken, and I never went there. So, next question, Prabhuji, और ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि इसी लाइन पर कभी ये ऑब्जर्वेशन मुझे मिला कि हम लोग भगवत गीता या भागवतम, जैसे संडे का लाइट ऑफ भागवतम का सेशन है, तो ये जो हम पढ़ते हैं और हमें जो पढ़ाया गया है, स्पेशली मेरे टाइम की बात है, आप एनसीईआरटी की बुक्स भी उठाएंगे तो उसमें साफ साफ ये वर्ड मेंशन है, दिस इज माइथोलॉजी, राइट? माइथोलॉजी का सब्जेक्ट। तो हम एक माइथोलॉजी को बेस बना के अपना जीवन कैसे कर सकते हैं, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये भगवत गीता या भागवतम के ऊपर है? आई मीन इट इज वेरी कॉमन, यहाँ पे बैठे कई डिवोटीज होंगे, उनके मन में नहीं होगा, लेकिन आप बाहर की सोसाइटीज में जाएंगे, इट्स अ कॉमन कंसेप्शन, दीज आर द माइथोलॉजी, देयर इज नो साइंस इन इट। Yeah, I mean it's a very very interesting question actually. देखिए, कहीं ना कहीं हम उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, पर साइड बाय साइड वी आल्सो हैव लॉट ऑफ फेथ ऑन इट। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, आप में से कितने लोग मंदिर जाते हैं? रेज़ योर हैंड। और आप जिस भगवान को पूजते हैं और जिन ग्रंथों में भगवान के बारे में बताया गया है, आज का समाज उन ग्रंथों को माइथोलॉजी कहता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ डायकोटोमी। हमें समाज बोलता है ये मिथ है, पर फिर भी हमारी श्रद्धा बनी हुई है। That's the glory of this culture actually, क्योंकि पूर्वजों से एक श्रद्धा आई है, तो श्रद्धा भी टूटी है, that's a good thing. देखिए, there are many things to add to this subject matter. क्या हमारी वैदिक संस्कृति शास्त्र एक मिथ है? आप जानते हो कि संस्कृत भाषा को लेकर, संस्कृत is said to be the mother of all languages. Now, those who are in the IT and computer field, they also understand Sanskrit is a world language. Recently, one student, I believe in America or London, he had solved one of the, the theorems or the prose of Sanskrit, which has actually helped the computer language become more easy now. Yeah. There was something, isn't it, right? Yeah. So even the computer language is dependent on Sanskrit language. And हमारे शास्त्र में किस ज्ञान की चर्चा नहीं की गई है? There is a knowledge about mythology, there is a knowledge about universe, there is a knowledge about embryology. जब माँ गर्भवती होती है, the moment she gets pregnant, till the time she delivers, the details, day by day details is given in the Vedic scripture, जो अभी भी साइंस को नहीं पता है. You know, we are told we are mythology because there is an Aryan invasion theory, so many things like that. You know, we have one of the richest culture. We have the the Saregama. Where does the Saregama came? This is the basis of all music. We have the most wide, the most broad cuisine. You know, we have so many dialects, so many varieties are there. You look at the construction of the ancient temples. आज के तारीख में भी ऐसी construction नहीं बनती करके. So, anyways, this is just a kind of a false narrative which we are subjected to the propaganda done by those who want us to believe in a certain direction. Maybe I can speak on one subject matter a little bit, just as a food for thought for all of you. देखिए, वेदिक संस्कृति के अनुसार हमारा जो अस्तित्व है वो 3 स्तर में होता है. One is body, second is subtle body, third is आत्मा. उसी सब्जेक्ट मैटर की जब चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद और मुंडक उपनिषद में आती है, उसमें बात करी गई है कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है. आत्मा है तो आत्मा का प्रमाण क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस. और फिर चर्चा आती है कि ये जो मनुष्य की चेतना है उसका विकास कैसे होता है. उसका विकास 5 स्तरों में होता है. It's a fantastic and a profound subject. Let's see if you can connect to it. इसको कहा जाता है, maybe you can just repeat after me. Anamaya consciousness. Second consciousness होती है, level of consciousness, pranamaya consciousness. Third, manamaya consciousness. Fourth, vijnanamaya consciousness, and the 5th is anandamaya. I will not go into all the 5. Let me just focus a little bit on anamaya and pranamaya. So, Mundak Upanishad में इसका चर्चा आता है. Taittiriya Upanishad discusses about the history of it, how Bhrigu Muni actually got to know about all this level of consciousness, but Mundak Upanishad gives the science of it.
तो बताया गया है अनामय चेतना क्या होती है। जब व्यक्ति की चेतना, जिसको अनामय चेतना कहा गया है, उस समय उसको he only or she only thinks the whole world is meant for his or her consumption। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता है ना, उनके हाथ में कुछ भी आता है it goes within the mouth। जो बचपन मतलब जन्म से लेकर 5 साल की उम्र जो होती है, हर मनुष्य की चेतना अनामय चेतना के समान होती है। उदाहरण आता है हनुमान जी का, अभी हनुमान जयंती बनाई थी। हाउ ओल्ड वाज हनुमान जी व्हेन ही लीप्ड टुवर्ड्स द सन थिंकिंग दैट इट्स अ बिग फ्रूट। ही वाज यंगर देन 5-year-old। तो जो अनामय चेतना होती है, इस विकास के स्तर पर व्यक्ति और शिशु को केवल खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। Now that is important because जो शरीर है वो अन्न का बना है, जो मन है वो विचारों से बना हुआ है। इसलिए जब बच्चा छोटा होता है उसको अन्न क्या क्या दिया जाता है उसका पूरा का पूरा विधि विधान दिया हुआ है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि आप अनामय चेतना से प्राणमय चेतना में गए तो आपकी अनामय चेतना आपको त्यागनी है। अन्न जीवन के साथ रहता है, हम जीवन भर अन्न को ग्रहण करते हैं और इस अन्नमय चेतना को लेकर उसका कैसे विकास होना चाहिए उसके लिए बहुत साइंस दी गई है। I'll just quote one example. All of you probably know about महाभारत। जब भीष्म पितामह अंतिम समय में पांडवों से मिलते हैं तो कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से प्रश्न उठाते हैं, राज्य धर्म, स्त्री धर्म, कुल धर्म इत्यादि। 1 महीने लंबा चर्चा चलता है। उस समय द्रौपदी जब भीष्म पितामह से इतने ज्ञान के शब्द सुनती है तो उसको क्रोध आ जाता है और भीष्म पितामह से कहती है, हे पितामह, आज तुम मेरे पति को बहुत उपदेश दे रहे हो, तब आपका सारा ज्ञान कहां था जब दुर्योधन ने बड़ी सभा में मुझे धकेल के लाकर खड़ा करा था और मैं आपसे अपनी रक्षा की भिक्षा मांग रही थी, तब आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं करी, तब आपने धर्म की परिभाषा क्यों नहीं बताई। कोई जानते हैं भीष्म पितामह ने क्या जवाब दिया था? भीष्म पितामह ने कहा, हे द्रौपदी, क्योंकि उस समय तक मैं दुर्योधन के द्वारा दिया हुआ अन्न खा रहा था, क्योंकि उसके द्वारा दिया हुआ अन्न खा रहा था इसलिए मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। जिस दिन तुम्हारे पति अर्जुन ने मेरे शरीर में बाण भेदा, उस अन्न से पैदा हुआ सारा दूषित खून अर्जुन के बाणों ने निकाल दिया। जैसे ही वो दूषित खून मेरे शरीर से निकल गया है, मेरी शुद्ध चेतना वापस आ गई। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ता आहार विहारस्य। हमारी खाने की जो चीज होती है उसको बहुत सोच समझ के खानी चाहिए। Let me give an example. I was making this point today morning only. Piramal जो है big constructor and all that, what you call industrialist in Bombay. So he's a very well connected with the Vedic culture and Vedic science. तो उनकी बेटी की शादी थी। So हमारे यहाँ से एक ब्राह्मण देवता गए थे उनके यहाँ हवन जो पूजा पाठ होता है। वो सब होने के बाद ताज होटल के अंदर बड़ा फेस्टिवल था, शादी का समारोह था, दुनिया भर के मल्टी कुजीन वाज सर्व्ड देयर। सो ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा भाई हम ये तो नहीं खा सकते, तो पिरामल जी उनको पर्सनली जानते, तो पिरामल जी से जाके बोले देखिए you know that I cannot accept any of this thing. Do you have anything else? When I heard this I was amazed. You know what Piramal said? Piramal said yes. आपको क्यों खाना है प्रभु ये? आप आइए, आप मेरे संग खाइए। उनका मतलब क्या मेरे संग खाइए? तो पिरामल ये इतना एक्सपेंसिव फूड नहीं खाएगा। So then this devotee told me that Piramal took him to a separate place जहाँ पिरामल के लिए उनके कुक के द्वारा भोग या खाना बनाया गया था। And then this devotee asked, "Oh, do you always travel with your cook?" और पिरामल जी ने तब कहा, ये जो कुक मेरे लिए आज खाना बना रहा है, मैं छोटा सा बच्चा था तब से ये मेरे लिए खाना बनाता है। अगर मैं खाना किसी के हाथों को खाता हूँ, अपनी माँ, अपनी पत्नी या ये कुक, इसके अलावा मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाता। ये पिरामल जी। Let me give you a little Puranic story about it. Anka. I'm just giving you some hints. This is a subject matter to discuss in detail. What about this level of consciousness? तो एक शास्त्र में कहानी आती कि कैसे एक राजा थे जिसका रसोई जो सेवा करते थे
उनके लिए खाना परोसने के लिए आते हैं। रात में खाना खा के जब राजा सोने के लिए जाते हैं तो उनको याद आता है, उनको एहसास होता है कि उनका जो एक्सपेंसिव नेकलेस था वो गायब है और बड़ा ही हड़कंप मच जाता है। राजा कहता है, अरे ये तो मेरा फेवरेट नेकलेस अब कैसे चोरी हो गया। अगले दिन सुबह उस राजा का जो रसोई क्या कहते हैं कुक था, रसोईया जो था, वो राजा के सामने आकर राजा के चरणों में वो हार उनके चरणों में रखता है, कहता है, मालिक मुझे माफ करिए, मैंने चोरी किया। राजा कहते हैं, हे बाबा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान पुश्तानी समय से मेरे परिवार की सेवा करता आया है, तुम्हारे लिए हमने कभी कोई कमी नहीं रखी। तुमने, आपके परिवार में आज तक किसी ने चोरी नहीं करी, तो आपने चोरी कैसे करी? You know what the रसोइया said? बोला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 2 दिन पहले जिस समाज में वहां रहता हूँ, वहां पड़ोस के घर में क्या कहते हैं, राइस, नहीं राइस को क्या कहते हैं, चावल की डकैती हुई थी। There were rice bags. Some thieves came. They stole the rice bags. और जब गांव में हड़कंप मचा तो वो रात्रि की बात थी और वो भागम दौड़ी में वो राइस बैग मेरे घर के बाहर छोड़ के चले गए। मेरी श्रीमती को पता ही नहीं चला क्या है, उनको लगा हम ब्राह्मण हैं, हो सकता है कोई दान में देकर गया होगा। अगले दिन, which means आज सुबह की बात हुई है, कल रात उस रसोइया ने चोरी करा, मतलब कल सुबह और दोपहर को वो रसोइया कहता है कि मेरी पत्नी ने उन चावल को कुक करके मुझे खिलाया और एक ही दिन के अंदर मेरी मानसिकता इतनी परिवर्तित हो गई। जब मैं कल रात आपको खाना परोसने के लिए आया, पता नहीं कैसे आपके हार को देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मौका देखते मैंने चुरा लिया। परंतु क्योंकि व्यक्ति चोर नहीं था, जब घर गया बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए मालिक मैं आज सुबह आपके समय ला के रख दिया। राजा said, all right, because I know, even बनाया किसने? पत्नी ने, परंतु वो राइस चोरी वाला राइस था। So there's a whole subject matter about the science of the food. आप किसके हाथ का खाते हैं, क्या खाते हैं, वो चेतना पे बहुत असर करता है। Unfortunately, because we are only studying matter, gross matter today, हमें सटलिटी का कुछ भी एहसास ही नहीं है। ये होती है अन्नमय चेतना। उसके बाद आपका आता है प्राणमय चेतना, जो 6 साल से लेकर 10 साल तक विकसित की जाती है। जहाँ पर अब बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है, गो एंड प्ले। बट वन मोर थिंग, प्राणमय चेतना क्या है? जहाँ पे उसको प्राण को विकसित करने के लिए उसको समय दिया जाता है। तो कई बार पेरेंट्स पूछते हैं किस उम्र में बच्चों को डांटा जा सकता है? आप डांट तो किसी भी उम्र में सकते हैं, परंतु अगर फिजिकल वार्निंग देनी है तो केवल 0 से 5 इयर्स की एज में, उसके बाद व्हाई? फॉर एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण जब गोपाल थे तो उनकी माँ ने, जब दामोदर लीला हुई थी, गोपाल कितने साल के थे? जब माता यशोदा ने गोपाल को रस्सी से बांधा था, कृष्ण वाज ओनली 3 years old. After 5 years, there is no physical warning. This is not the Vedic culture. You can talk to them. You can explain. क्यों? क्योंकि अब प्राणमय चेतना है. They have to learn to regulate. अब आप जब उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे, परंतु जब बचपन में छोटे होते हैं बच्चों को समझ नहीं आती। जैसे माँ यशोदा ने कितनी बार बोला कन्हैया को, मिट्टी मत खा, शरारत बहुत करता है। But when Krishna didn't listen, Mother Yashoda died. So like this, you help develop the child, his prana, then comes manamay. और इन सभी स्टेजेस के लिए हमारे शास्त्र में अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, जिससे उनकी चेतना का विकास हो। And like this, you go from 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, and 16 onwards. इसमें चाणक्य पंडित ने कहा है, जब 5 साल का बच्चा होता है तो पालन, उसको जितना पैम्पर करना है पैम्पर करो, बच्चे को माँ से कभी अलग नहीं होने दो। The child should not get separated even a single day when the child is less than 5. But 5 साल से ऊपर होने के बाद, now you can keep him aside and he should learn to grow by himself. उसको in supervision. और फिर जब वो 16 साल की उम्र का हो जाता है, 11 से 16 साल जो होती है, that's a time when you have to be the most strict with the child, because सबसे dangerous ये होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है teenage years. That's the most troublesome year, and that's the time you have to be most strict. और अगर उस समय बच्चा रेगुलेशन के अनुसार जीवन जी लेता है तो चाणक्य पंडित कहते हैं 16 साल होने के बाद वही बच्चा अब आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लायक है। नाउ
you have helped him grow in a character. आप लोग बड़े गंभीर हैं. I mean, I'm just giving you a trailer of what all our Vedic scripture talks about how to do this. So there's a lot to learn. But just I guess how many of you kind of, I mean, आपको कितना समझ आया? But how many of you would appreciate a little bit of the depth of the psychology which is given in the Vedic knowledge? Yes or no? मैंने ये आपके से निश्चय चर्चा करी क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि Vedas mythology ये सब मजाक लग रहा है आपको? This is facts. We all have experience. We all have gone through this age. उस प्रकार से पालन पोषण किया जाता है. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. So I think we are almost done. But before we close, I want audience to ask you questions. Is it okay? Any questions from anyone? Would like to ask anything? Let's have a host suggest. Do we have mic, cordless mic? If anyone has anything to say or clarify, we can take a question or two. Yes. So we were talking about character, right? Character and capability. Arjuna, in the entire epic of Mahabharata, Arjuna was not the only one with the high character. There were others as well, like Yudhishthir. We call him Dharmir, right? Dharmaraj. So why not Yudhishthir? Why Arjuna only? See, Arjuna had chosen Krishna to be on his chariot. If Krishna was with Yudhishthira Maharaj, then Krishna would have spoken to Yudhishthira Maharaj also. You know? And is this something that Krishna did not got that wisdom? Yudhishthira is not. Krishna ने युधिष्ठिर को वही ज्ञान भीष्म पितामह के माध्यम से दिलवाया. Bhishma Pitama also spoke to Yudhishthira Maharaj. But the circumstances were such, Krishna and Arjuna were together. And Krishna chose that. But Yudhishthira Maharaj को भी ज्ञान मिला. उसको तो 1 महीना लंबा ज्ञान मिला. अर्जुन को तो 45 मिनट का ज्ञान मिला था. Alright. So thank you. These are all new things for us. Exactly, we have seen Mahabharata epic, but we never know it was for 45 minutes. I mean, because you saw it, that's the reason. Because they see only what entertains our senses. What we have seen is not even the 2% of the truth. Absolutely. They just add melodrama and things like that, so that we are attracted to it. I remember when I was growing up, Sunday morning, 8 or 9 o'clock Mahabharata आती थी. 9 o'clock. 9 o'clock, right? पूरे society में सन्नाटा होता था. Everyone would be in front of the TV. I'm from North India, and Sunday morning means garam aloo ke parathe with hot jalebi. My mother would serve that, and we watch Mahabharata. So correct, but there's a lot to learn. And you don't have to really struggle hard to study Mahabharata. We discuss about it. Such kind of forums you can join. You might find it helpful. Thank you. This Thank you. was very. Thank you so much. Thank you. Yes. Hare Krishna Prabhuji. I want to ask, you talked about sacrifice. Can you please elaborate more as a parent? I mean, actually, parents' time is all about sacrifice. Yeah, but from a child perspective nowadays, sacrifice is like, yeah, what's a big deal? You are doing everything, whatever is supposed to be done, right? So, can you elaborate more? Sorry, I just missed the question. There was a little sound behind here. Hare Krishna. The kids can. Yes, say that again. What's the kids' perspective? Yeah, from the kids' perspective, it's like they are, whatever they are getting right now, they are taking it from granted. So, can you elaborate from the Vedic perspective, what kind of sacrifice as a parent you should do? No, it's not like you're doing a lot, but there's something misalignment to it. I mean, it's a subject matter in itself, but I'll just make 1 or 2 points for you to understand. The culture of the system is such, how we deal with our seniors, the laws of nature are such, they would replicate that behavior with our subordinate. I would give you a moment of reflection. I'm gonna say something which might sound a little shocking to you. If you find your kids are a little subordinate or disobedient, if your kids have taken you for granted, I would want you to little bit reflect in your relationship with your parents and elders. That is just getting reflected. Okay. This is how everything in this creation is cyclical. If our relationship upwards, which means with our seniors, is intact, the law of nature would create a facility where subordinate would also follow. As I said, बच्चे सुन के नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते. जैसे कि मैंने कई बार देखा है जब पेरेंट्स मंदिर आते हैं,
जैसी पेरेंट्स प्रणाम करते हैं, आप देखेंगे बच्चे अपने आप झुकते हैं. Parents doesn't have to tell every time, maybe sometimes, but the kids follow. So I guess maybe we need to reflect. We are probably giving them, but not maybe everything. आज हम क्या देते हैं? We give it on the name of giving love. We give them gadgets. But actually, according to the child psychologist, बच्चे प्रेम को possession के रूप में नहीं देखते. बच्चों के लिए प्रेम की परिभाषा होती है समय. They measure love in terms of the time you spend with them. I know, I do understand people find it too difficult, because therefore I tell our congregation, every parent at least once in a week, if there is a son, you should go and play with the son, if he's coming up to teenage years. Because that's a time when the son should feel my father is my best of my friend. If he finds best of the friendship outside, you're going to get into trouble. You should take out time to go and play. Similarly, mother has to spend time with the daughter, and vice versa. But we are giving too much material comfort these days. We're too much worried about their well-being, physical well-being, but not the psychological well-being, because that involves a little bit of our time and effort. And more or less, I believe we should be knowledgeable enough to prove our child regarding the scientific answer to all their queries. See, for anyone to know, correct, for anyone to know all the answers is not possible. So you know earlier how would it happen? If in case chat comes to you, you don't have an answer, you say, "Dad, please जाके पूछ लो." आज हमारा जो सीनियर ग्रुप है वो पूरा गैप हो गया है. The kids do not have access to their grandparents. I mean, I'm not saying anybody feel responsible for that. It is just the social system today. पहले माँ बाप को सारा टेंशन नहीं लेना होता था. In fact, kids were not even much raised by the parents. They were always all the time with दादाजी or the grandparents. And the grandparents will love them, care them. इसलिए कहा जाता है माता पिता से ज़्यादा दादा दादी का प्रेम होता है. But now they don't have that. There is no connection. So I mean, Srila Prabhupada in this regard used to make a point. I don't want to sound discouraging to anyone here. Srila Prabhupada always used to make a point. Make the best use of the bad bargain. Maybe you cannot change the situation, but even at this point of time, you can add Vedic wisdom in your life. Be part of the culture where people like you living in this nuclear setup, while they are able to give a culture to their kids, why don't you become a part of the culture where you don't have to make any changes in your life? You don't have to quit your job, you don't have to move, continue what you're doing, but now you can add on to a culture which ISKCON is trying to create for all of you. Then maybe things can resolve, and that's what has happened. See, I wanted to add at the end, because you made a point. All the devotees here who served, how much they had to work. They had more than 130 kids with them. I had 12 boys staying with me, because during the same time I had a teenage camp where 12 boys were living with me. It's too difficult. I had 4 brahmacharis you need to take care of, not than me. They were driving me nuts. You have 12 teenagers around you, so much full of energy, they cannot sit idle for a second. So I used to have 3-4 men around me, and I can't do anything. This is just meeting up. Imagine all this congregation. I mean, how much? 20 odd plus devotees. 20-30 of these devotees. They spent entire week. Each one of them have their family. Each one of them have their own professional life. There is not even a single penny. None of them work for money. Why did they work so hard? To give you a glimpse of the culture. The culture that they got a glimpse of it, they felt highly empowered. Now they want to give back that to the society, where other people get to experience that. When I came for the first time here, nobody was here. Now you have 130 kids. It's a huge endeavor. We started 2018 with what? 30 kids, 30, 40? With that, 130 kids is an enormous effort. So with that, I'll probably take a pause here. I want to give a big round of applause. Everyone should give a big round of applause for this team. They spend their days and nights together. हर कोई अपने बच्चों का ध्यान रखता है, तो किसी अनजान व्यक्ति के बच्चों का ध्यान रखना is a spirit of sacrifice. Give them a big round of applause. I hope that answers.